Hello, Prowings. How you all are doing today? I'm also doing great and hope you are enjoying. Okay, चलो पढ़ाई तो जोरदार चली रही होगी तो हम लोग भी देख लेते हैं इस बार का टेस्ट पेपर कॉर्पोरेट फंडिंग का हुआ एंड आ से आहा तक दैट वाज द रिएक्शन स्टूडेंट्स का क्या सर क्या पेपर था कितना कुछ लिखना था कितना कुछ समझना था ठीक है चलो लेट्स अंडरस्टैंड पेपर ऐसा था कि फेडरल बिल्ड्स लिमिटेड अ लिस्टेड कंपनी थी and in spite of having excellent performances of the stock performance in the stock performance was lackluster, which खास नहीं था. And it was noted that the retail participation in the stock is quite low. Question में ये दिखा हुआ था, ठीक है? फिर क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट था उसके अंदर ये दिया था कि 30th सितंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न दिया है अपने सामने. So by 30th September, what was the shareholding pattern? Promoters group 10 नंबर में आते हैं, नंबर ऑफ शेयर 75 एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 4 का 12 लाख, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का 6 का 1 लाख, बॉडीज कॉर्पोरेट का 10 नंबर में एंड शेयर्स में 3 लाख, रेसिडेंट इंडिविजुअल्स 1240 एंड 2 लाख करके आ रहे थे. ओके सो ये हो गया पार्टिसिपेशन. फिर क्वेश्चन आगे लेके गया. द कंपनी अर्लियर अलॉटेड warrants to the promoters. ठीक है, यहां तक ठीक था. These warrants were converted into 10 lakh equity shares of 10 each at a premium of 90. ठीक है, the prevailing price of the equity share in the stock market is 65 rupees right now. ठीक है, ये पूरा सिनेरियो देने के बाद जब क्वेश्चन आया तब मजा आ गया. तो क्वेश्चन ऐसा था, what is the percentage of holding of each kind of shareholder बिफोर एंड आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अगेंस्ट वारंट्स. तो आपको ये बताना था कि हर एक शेयर होल्डर की परसेंटेज ऑफ अलॉट क्या होगी जब वारंट का अलॉटमेंट हो जाएगा और वारंट के अलॉटमेंट के पहले. दूसरा क्वेश्चन ये था, व्हाट परसेंटेज ऑफ होल्डिंग इज रिक्वायर्ड टू बी मेंटेन बाय द प्रमोटर्स टू कंप्लाई विद द कंटिन्यूअस लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स एंड हाउ मच ऑफ द प्रमोटर होल्डिंग हैज टू बी डाइल्यूटेड to adhere to that legal provisions. ठीक है, सो आपने को ये बताना था कि रूल 19(2)A और SCRA रूल्स के हिसाब से कितनी होल्डिंग चाहिए थी. एंड नेम 4 options which is available to the company or to the promoters for increasing the public company holding so as to meet the continuous listing requirements. इंटरेस्टिंग पॉइंट यही था. ऑप्शन 1 आप पब्लिक फंडिंग कर सकते थे, ऑफर फॉर सेल से निकाल सकते थे, या फिर राइट्स इश्यू इन द पर्टिकुलर क्लास निकाल सकते थे. कई ऐसे ऑप्शंस आप एक्सरसाइज कर सकते थे. ठीक है, एंड इसके बाद ये था, ऑल्सो एक्सप्लेन इन डिटेल द क्वांटिटी, द परसेंटेज, रेशियो, मेथोडोलॉजी टू बी अडॉप्टेड फॉर दिस पर्पस. ठीक है, ओवरऑल देखा जाए क्वेश्चन अपने आप में इंटरेस्टिंग था और आपके इश्यू ऑफ कैपिटल को पूरी तरह टेस्ट कर रहा था. अगर आप आंसर को देखना शुरू करते हो तो हमने कुछ तरीकों से आंसर बनाया था. सीरियल नंबर, बिफोर अलॉटमेंट, आफ्टर अलॉटमेंट. ठीक है, सोच रहा हूँ. ठीक है, मैं पूरा आंसर डिस्कस नहीं कर रहा था क्योंकि अगर पूरा डिस्कस कर दिया तो ऐसा लगेगा सर सस्पेंस दे दिया, और दैट्स व्हाट स्टूडेंट्स वर रिक्वेस्टिंग कि सर थोड़ा रहने दो और हम लोग फिर से कोशिश करेंगे. तो ठीक है, ये वाले क्वेश्चन का आंसर मैं बोलता हूँ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लो एंड डाउनलोड करने के बाद फिर से कोशिश करना. ओके, फिर से उसको याद करने की कोशिश करना एंड वंस यू लर्न एंड रिमेंबर, अच्छे से समझ में आ गया तो बस फिर हो गया काम. ठीक है, तो ये वाले का आंसर आई वुड से ट्राई इट योरसेल्फ. आंसर पूरी तरह दिया हुआ है. क्वेश्चन फिर से सोचो, पढ़ो, समझो और फिर इसको ट्राई करके देखो. एज यू कैन सी मैं दिखा रहा हूँ, पूरा आंसर आपको मिलेगा, फुल आंसर A to Z ऑप्शंस के साथ. के पब्लिक ऑप्शंस हो सकता है. ओके, पर इसको रट्टा करने मत बैठ जाना, दिमाग लगा के सोच के आंसर करने की कोशिश करना, तब समझ में आएगा. क्लियर? अदरवाइज डिस्कस करने में तो वैसे ये वाले क्वेश्चंस मैंने क्लास में डिस्कस किए हैं, पर फिर भी आई वुड सजेस्ट प्लीज गो फॉर दिस. ओके, क्लियर? अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, तो दैट विल बी हेल्पिंग अस टू अंडरस्टैंड व्हाट कैन बी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा था, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ सीड फंडिंग. सीड फंडिंग का कंसेप्ट पूछा था. अगर आंसर लिखना चाहो तो सीड फंडिंग, सीड मतलब शुरुआती तौर पे और फंडिंग मतलब कैपिटल की तरफ इन्वेस्टमेंट्स. तो क्या होगा ये सीड फंडिंग, कैसे होगा सीड फंडिंग? सिंपल शॉर्ट नोट लिखना था तो वही लिखना था, सीड फंडिंग टेकन फ्रॉम द वर्ड सीड इज अ कैपिटल नीडेड टू स्टार्ट और एक्सपांड द बिजनेस. फिर हम लिख सकते थे, इट ऑफन कम्स फ्रॉम द कंपनीज फाउंडर्स पर्सनल एसेट्स, फ्रॉम फ्रेंड्स, फैमिलीज, अदर इन्वेस्टर्स. The amount of money is usually relatively small because the business is still in the idea or conceptual stage. This type of funding is often obtained in the exchange for equity stake in the enterprise.
Although this with the less formal contractual overhead, then standard equity financing, these kind of financing is also prevalent. अच्छा, इस सीड फंडिंग में स्टार्टिंग शुरुआती तौर पे जब पैसा डालते हैं उसकी बात है. फिर हम लिख सकते हैं लेंडर्स ऑफन व्यू सीड फंडिंग, सीड कैपिटल एज अ रिस्की इन्वेस्टमेंट बाय द प्रमोटर्स ऑफ द न्यू वेंचर, which represents a meaningful and a tangible commitment on the part of making the business to success. Because lenders को हमेशा लगता है कि शायद successful होगा क्या, ठीक है. And this would be a type of venture capital fund, hence covered the provisions of angel funding in the AIF also. तो ये हो गया एक शॉर्ट, एक स्वीट सा आंसर सीड फंडिंग में क्या क्या चाहिए. क्लियर. ये हो गया सीड फंडिंग समझाने का तरीका. सीड फंडिंग होता क्या है, कैसे होता है. ठीक है ठीक है ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन था ये वाला. एग्जैक्टली. क्वेश्चन 2 था, 2B था, Devonish Limited has issued debt securities in December 2019 for a prospective project which was being for March 2020 onwards. However, due to COVID-19 situation, the project did not begin and the board of directors decided to recall and redeem the debt security prior to maturity. Okay, interesting subject. मतलब वो अपना पैसा वापस देना चाहते हैं और आप they want to take back the debt security. So आपसे पूछा गया explain the company, the conditions to be complied for redemption of debt security. Simple, हमने conditions discuss कर दी है. तो यहाँ पे certain conditions that we can discuss in the answer. हम लिख सकते थे कि the issuer Devonish Limited made public issue of the debt security may recall such security prior to maturity date at his option, जिसको call option भी बोल सकते हैं, और provide such right of redemption prior to maturity date at put option to all the investors, all to the retail investors at their option. ठीक है. फिर हम लिख सकते थे such rights to recall and redeem the debentures prior to the maturity date is exercised in accordance with the terms of the issue. तो issue के हिसाब से इसको exercise किया जाएगा जो भी issue के terms होंगे. And a detailed disclosure has to be made in the offer document relating to the date from which such right is to be exercised, the period of exercise which should not be less than by any means 3 working days, then the redemption amount including the premium and the discount with which such redemption shall take place. मतलब एक तरह से आपको अगर redemption exercise करना है तो ये बराबर से ऑफर डॉक्यूमेंट पे लिखा होना चाहिए कि कितने प्राइस पे किस नेचर में redemption होगा. ओके. फिर हम लिख सकते हैं issuer and investor may exercise such right with respect to all the debt security issued or held by them respectively or with respect to a part of security also. तो चाहे तो सारा का सारा issue वो redeem, that is prematurely redeem कर सकते हैं, या फिर part of the security also. फिर हम लिख सकते हैं in case of a partial exercise of such right, that they are not exercising full right, in accordance with the terms of the issue by the issuer, it shall be done on proportionate basis only. ठीक है. तो अगर partial basis पे होगा तो proportionate basis पे होगा. And no such right shall be exercised before the expiry of 24 months from the date of the issue of the security. तो 24 महीने का time gap हो गया. And issuer shall send a notice to all the eligible holders of the debt securities. Okay, he has to send the notice. So he will send the notice to all the eligible debt security at least 21 days before the date of meeting. कितना दिन? 21 days के हिसाब से. And issuer shall provide a copy of notice to stock exchange also. इसको stock exchange also. And where such debt are listed for a wider dissemination and shall make an advertisement in the national daily having a wide circulation in the details with the details of the rights and the eligibility of the holder who are entitled to avail of such right. तो पूरी तरह सबको बता दिया जाएगा that now we are repaying the funds. Clear? इसके साथ साथ the issuer shall pay the redemption proceeds to the investors along with the interest due to the investors within 15 days from the last day on which such right can be exercised. तो यहाँ से 15 दिन में सबको पेमेंट मिल जाएगा. तो इस तरीके से हम चाहे तो अपना इशू का पैसा वापस दे सकते हैं, डेट सिक्योरिटी का. क्लियर? और साथ में लास्ट में जाते हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑल्सो. द इशूअर मे पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 15% per annum for the period of delay if any, and after the completion of the exercise of the right the issuer shall submit a detailed report to the stock exchange for public dissemination regarding the debt securities redeemed during the exercise period and the details of the redemption thereof. And last में लिख सकते हैं, it may be noted that the investor shall mean the holder of the debt security with the face value of not more than 2 lakhs. तो ये आपने ओवरऑल सिनेरियो समझा दिया, आपके मॉड्यूल में भी था और आपने डिटेल में समझा दिया कि किस तरीके से ये हो सकता है. That is, a person can redeem or recall before maturity, okay, of the debt security. ठीक है.
अब आता हूँ थर्ड क्वेश्चन पे, डिस्टिंग्विश बिटवीन ए कमर्शियल बिल एंड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत लोगों ने लिखा, खुश होकर लिखा, तो ठीक है चलो लेट्स सी द आंसर। आंसर भी सिंपल था, कमर्शियल बिल इट इज एन अनसिक्योर्ड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट issued in the form of a promissory note to highly rated corporate borrowers to diversify the sources of the short-term borrowings, to provide additional instruments to the investors। ठीक है, ये पैराग्राफ हो गया। नेक्स्ट में लिख सकते हैं, companies, primary dealers, financial institutions permitted to raise short-term resources under the umbrella which is fixed by the Reserve Bank are eligible to issue commercial securities। Clear? The next part में हम लिख सकते हैं, the company would be eligible to issue commercial paper provided a tangible net worth of the company as per the latest audited balance sheet not less than 4 crores। The company has been sanctioned a working capital limit by the banks or financial institution, and the borrowal account of the company is classified as standard asset by fixing the banking of the institution। Clear? समझा? फाइन। अब आता हूँ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स के डेफिनेशन पे। तो इंटर कॉर्पोरेट डेफिनेशन क्या होता है? इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स ये बोल सकते हैं, दे आल्सो हैव एक्सेस टू द अदर मार्केट्स कॉल्ड इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स मार्केट। And ICD is an unsecured loan which is extended by one corporate to another, existing mainly as a refuge to low and rated corporates। And फिर हम बोल सकते हैं एक कॉर्पोरेट दूसरे कॉर्पोरेट को डिपॉजिट दे रहा है, तो it's a small segment of market, and this market allows the corporate with a surplus of funds to lend to the other corporate facing shortage of funds। तो अगर किसी को पैसे की जरूरत है तो हम दे सकते हैं, उस तरीके का है। And another aspect of this market is that the better rated corporates can borrow from the banking system and lend this market to make the speculative profits also। So I can borrow from the bank, lend at a higher rate to the companies and make profit also। जैसे कई financial institutions करती भी है, okay? And as the cost of the funds of a corporate is much higher than that of the bank, thus the rates in the markets are higher than those of the other markets। And ICD are unsecured, hence the risk is inherent। And ICD market is an absolutely unorganized market with a very less information available publicly। तो ये हो गया हमारा ICD का पैराग्राफ। अब आप देखो तरीका, कॉमर्शियल बिल अलग लिखा और ICD का पार्ट अलग लिखा। बोथ कैन बी एक्सप्लेन्ड इन पैराग्राफ वाइज, और अगर आपके पास टेबल बना के टी शिप में आपको एक्सप्लेन करना है तो वैसे भी कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट वाला, व्हाट इज अ मसाला बॉन्ड? एंड एवरीवन वाज लाइक सर ओके, फाइनली मसाला बॉन्ड आ गया। मसाला बॉन्ड्स एक इंडिया के बाद पैसा रेज करने का तरीका। तो मसाला बॉन्ड्स आर रुपी डिनोमिनेटेड बोरोइंग्स बाय द इंडियन कंपनीज in the overseas markets, and this is different from the other overseas borrowings in the sense that that in the other borrowings the currency is normally dollar, euro और yen। okay, तो ये अपने अपने हाइब्रिड बॉन्ड है, बहुत अच्छा बॉन्ड है, and it gives you quite a lot of flexibility also। The advantage of issuing a masala bond is that the company does not have to worry about the depreciation in the rupee in comparison to other currencies। This is normally a big worry for every kind of corporate while raising the money in overseas market। And if the rupee weakens at the time of the redemption of the bond, the company will have to pay more money to repay the dollars। That's the only funda। And this is a big advantage as many companies have raised their money by foreign currency convertible bonds in 2007 and found themselves with great difficulty as the rupee depreciated and fluctuated in the global markets। तो मसाला बॉन्ड अपने आप में बहुत अच्छा फीचर रखता है, बहुत यूनिक फीचर रखता है। आपका जो फ्लक्चुएशन रेट है वो ईच टाइम यू डोंट हैव टू बुक मार्क टू मार्केट मार्जिन्स में, ईच टाइम आपको लेना नहीं पड़ता। आपको ये देखना पड़ता है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रुपी, और उसको बस कॉम्पेंसेट करने का। सो दैट्स यूनिकनेस गिव्स स्टेबिलिटी टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, in order to compensate the risk of currency depreciation, the buyer of the masala bond will get a higher coupon rate and therefore it earns higher yield। The HDFC was the first company to issue the masala bonds for the aggregate amount of 3,000 crore, raised an aggregate of 5,000 crores. So the issuance of masala bond in 4 tranches। The first issue of masala bond by the HDFC bears a fixed semi-annual coupon rate of 7.875% and a tenure of 3 years and 1 month, and the bond has a issue price of 99.24% of the par value, at which it will redeem। So as you can see, it's a quite lump sum fees plus good interest rate, and the annualized yield of the bond was 8.33% per annum, and the bond is traded on the London Stock Exchange and not in India। okay, so that was the uniqueness। हमने HDFC का बॉन्ड का एग्जांपल भी दे दिया, आप देना चाहो दे सकते हो, नहीं देना चाहो ठीक है, आप एक्सप्लेन भी कर सकते हो। नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लिख सकते थे, मेनी पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनीज आर इन द फ्रे टू इशू मसाला बॉन्ड्स एज द कंपनीज हैव access to more funds and marginally higher cost of financing।
तो कई कंपनीज कोशिश तो कर रही है मसाला बॉन्ड्स इशू करने की और काफी सारी चीजें उसके ऊपर आ रही हैं. एंड द मसाला बॉन्ड्स वर रिकॉन्ड अंडर बोथ कॉर्पोरेट डेट एंड एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स. तो एफपीआई के लिए मसाला बॉन्ड दोनों है, कॉर्पोरेट डेट भी है और ईसीबी नॉर्म्स में भी आता है. आरबीआई रिसेंटली अमेंडेड रेगुलेशंस एंड करंटली मसाला बॉन्ड्स आर कवर्ड इन द ECB category where the borrowers need to seek the RBI approval to sell the securities. Okay, ये बात आपने क्लेरिफाई कर दी है. और आगे आप आंसर में ये भी लिख सकते थे that further the provisions of maturity period, all-in cost ceiling, recognize lenders investors of the masala bond as under. तो क्या क्या चीजें का ध्यान. मेच्योरिटी पीरियड की बात करूँ तो मिनिमम ओरिजिनल मेच्योरिटी पीरियड ऑफ द मसाला बॉन्ड फॉर अ वैल्यू ऑफ टू $50 million in Indian rupees per financial year will be 3 years, and the bond which is rated above $15 million equivalent in Indian rupees will be raised for 5 years. Clear? All-in cost ceiling limit हो जाएगा. That will be 300 basis point over the prevailing yield of the Government of India security. Quite interesting. 3% का ले रहे हैं. And recognize investors के हिसाब से entities which are permitted as investors under the provisions of the master direction should not be related party. In AS 24 बस इतना ध्यान रखना है. Not a related party and recognized by the master directions of RBI, they can be lending. Okay, तो ये द ब्रीफ ऑफ मसाला बॉन्ड्स पे आप ये सब लिख सकते थे. फिर क्वेश्चन 4A पूछा था. 4A में आपसे ये पूछा गया था दैट बुलबाक रियलिटी लिमिटेड कंटेम्पलेटिंग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट फॉर इट्स फ्यूचर प्रोजेक्ट एक्सप्लेन द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्पॉन्सर. तो हमको सिर्फ स्पॉन्सर की एलिजिबिलिटी समझानी थी आरईआईटी के रेगुलेशंस के हिसाब से. ओके, सो एलिजिबिलिटी क्या होगी. तो ईच स्पॉन्सर शैल होल्ड और प्रपोज टू होल्ड नॉट लेस देन 5% of the number of the units of REIT on a post initial offering basis. And each sponsor and sponsor group shall clearly identify the application of the registration to SEBI and in the offer document and placement memorandum also. Each sponsor should not less than 1% be identified as a sponsor, and out of the entities categorized as a sponsor, only following entities shall be considered: a person or the entity who is directly or indirectly holding interest or shareholding in the any of the assets of SPV, holdcos or proposed to be transferred to REIT. तो जिसका भी होल्डिंग होगा उसको कवर करेंगे. पॉइंट बी में हम बोल सकते हैं पर्सन और एंटिटी हु इज डायरेक्टली इनडायरेक्ट होल्डिंग यूनिट्स ऑफ आरईआईटी इन द पोस्ट इशू बेसिस, हम उसको स्पॉन्सर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. और अ पर्सन और एंटिटी हुज एक्सपीरियंस इज बीइंग यूटिलाइज्ड बाय द स्पॉन्सर फॉर मीटिंग द एलिजिबिलिटी कंडीशंस. तो अगर किसी का एक्सपीरियंस रह जाए तो वो भी स्पॉन्सर हो जाएगा. उसके साथ साथ ये भी बता सकते हैं स्पॉन्सर ऑन अ कलेक्टिव बेसिस हैव अ नेटवर्थ ऑफ नॉट लेस देन 100 crores. However, each sponsor has a net worth of not less than 20 crores that has to be ensured, and the sponsor or associate has at least 5 years experience in development of real estate and fund management in the real estate industry. However, where the sponsor is a developer, at least 2 projects of the sponsor has to be completed. Clear? So ये सारी चीजें हम लोग समझा सकते हैं. Is that clear for everyone? Good, very good. अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है सबको. Okay, what is FCEB and explain the pricing requirements of FCEB. So FCEB है क्या, उसके pricing requirements क्या है. FCEB means foreign currency exchangeable bond. According to the issue of foreign currency exchangeable bond schemes of 2018, FCEB क्या होता है, कैसे होता है, let's understand that. FCEB is a bond which is expressed in foreign currency. Okay, the principal and the interest in respect of which is payable in foreign currency. It is issued by issuing company being an Indian company, subscribed by a person resident outside India, exchangeable into equity of another company, being offered company in any manner, either wholly or partly, or on the basis of equity related warrants attached to the debt, and may be denominated. तो ये हो गया आपका basic feature FCEB है क्या. अब pricing के requirements देख लेते हैं. So pricing requirements हम ये बात करेंगे that at the time of the issuance of FCEB, the exchange price of the offered or listed equity shares shall not be less than half of the following two. तो दो चीजें याद रखना pricing में: the average of weekly high and low of the closing prices of the shares offered of the offered company quoted on the stock exchange during 6 months preceding the relevant date, and the average of weekly high and low of the closing price of the shares of offered company quoted on the stock exchange during the 2 weeks preceding the relevant date. ठीक है, तो ये हो गया प्राइसिंग 2 वीक का और 6 मंथ्स का जो आपको ध्यान रखना था. ओके,
अब आता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा गया था, सुजाता फैंस लिमिटेड came out with the IPO of 100 lakhs equity at rupees 100 each, including a premium of 90. The allotment was made on 30th November 2019. The stocks were listed on NSE BSE on 2nd December 2019. After some time, it was noted that additional funds are required for a new project to supplement the existing project, which was not envisaged earlier. Okay. It was advised that preferential issue route is quickest way to raise the funds. ठीक है, यहाँ तक तो क्वेश्चन ठीक था. After listing, the share prices hovered between 85 to 95. तो लिस्टिंग होने के बाद शेयर प्राइसेस में स्विंग आया 85 से 95 के बीच में. अकॉर्डिंगली अ रेजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द शेयर होल्डर ऑन 28 February 2020 to offer and allot the shares 75 lakh shares at price of 90 each, subject to the provisions of following entities. तो किस किस को देना था? तो इन लोगों को शेयर्स देने की बात उठी थी. ओके, सो दीज वर द एंटिटीज टू whom it was decided. The person was Ram Kumar Loya, Eco 12.50 shares, Liberty Private Limited 25 lakhs, LDF Asset Management Company, a mutual fund registered 25 lakhs, Dolly Khanna 5 lakhs, Pran Junjunwala 7.5 lakh shares, total 75 lakh shares. ओके, फिर आगे क्वेश्चन ये बोलता है, all the above investors also made investments in the non-promoter category in the IPO when the shares were allotted at 100 rupees. Out of them, Ram Kumar Loya and Pran Junjunwala, whatever, partly sold their shares, while the LDF Asset Management Company is also sold its entire holding during the month of January 2020 also. Okay, and the company has made an application with the stock exchange, which was rejected for non-compliance of SEBI guidelines. Okay, on hearing the verdict, the stock price went up and the average weekly high and low for 26 weeks was 140. Okay, well, stock markets में ये changes आए थे. In the light of the above, what was okay? अब आया real testing questions जो काफी students के लिए ऐसा था. But let's see. What are the breaches which is observed in the preferential offer for which the stock exchange rejected the listing? Okay, ये पूछा है, what is the meaning of the relevant date pertaining to the preferential issue and what is the relevant date in the present case for preferential resolution? ठीक है, and what shall be the final price for the allottees of the preferential shares explained with the reasons? ठीक है, तो चलो एक एक करके समझाते हैं. पहली बात यहाँ पे दिखाते हैं कि what are the conditions which the company has failed to observe as per the SEBI regulations. पहली तो pricing norms आई, दूसरी eligibility allottees. Applicable norms of Sujata Fund, the price at which the shares were issued by the company in its IPO, or the average of weekly high and low of the closing price of the related shares quoted on the stock exchange during the period shares have been risk being preceding the relevant date, या फिर the average of the weekly high and low of the closing price of the related shares quoted on the stock exchange during 2 weeks preceding the relevant date. So in the present case क्या गड़बड़ है? Present case में गड़बड़ ये है कि the IPO was made and first 13 weeks ago a price was of 100, that is rupees 10 plus 90 was a premium, and the average of weekly high and low for the 13 weeks was 90 rupees. Hence the price at which the equity shares was to be made was 100 is the eligible price, and the company chose to issue the share at 90, which is in violation of the pricing norms. Okay, so that is the first mistake that we can observe. And in the given case, आगे की बात बताते हैं, second भी बताएंगे. In the given case, the law of the proposed allottee named Ram Kumar Loya and Pran Junjunwala, they are not eligible for any kind of allotment as they have partly sold their shares before receiving, that is preferential होने से पहले 6 महीने के पहले ही उन्होंने अपने shares बेच दिए, तो they are not eligible. This clause is not applicable to the mutual funds, and therefore LDF Asset Management Company will continue to remain entitled to the allotment, but Ram Kumar Loya and Pran Junjunwala will not be eligible. Hence the application was rejected on about 2 grounds. तो यहाँ पे इसी वजह से उनका रिजेक्शन हुआ था सेबी के सामने. ठीक है, फिर आगे के क्वेश्चन के हिसाब से अपने को समझाना था सेकंड पॉइंट में कि प्राइसिंग के हिसाब डेट क्या होगी, रेलेवेंट डेट. तो अकॉर्डिंग टू सेबी रेगुलेशन द रेलेवेंट डेट फॉर द प्रेफरेंशियल इश्यू shall be the date 30 days prior to the date on which the meeting of the shareholders is held to consider the proposal of preferential issue. In the present case, the general body was held on 28 Feb 2020. Hence, a relevant date is 29th January 2020. Okay. Now, those students जिसने 30th January या 31st January लिखा है उसको भी पूरे मार्क्स दिए गए हैं. प्लीज उसको नोट कर लेना. ठीक है,
because that is the end of the month, so ठीक है, that is also a relevant date. And thirdly हम लिख सकते हैं as per the pricing norms, if a company allots some before the completion of 26 weeks under the preferential issue of equity shares and the price increases subsequently, as in our case such price shall be recomputed by the issuer on the completion of the 26 weeks from the date of the listing, and the stock exchange will reference to the average weekly high and low of the closing price. तो हमें रिकैलकुलेट करना पड़ेगा प्राइस और ये पता करना पड़ेगा कि प्राइस बढ़ी है कि कम हुई है. Now, during this 26 weeks, if this recomputed price on the allotment shall be the price which is paid by the allotee to the issuer, in the present case, the price shall be 140, and thus the difference between 100 and 140, that is 40 rupees, has to be collected. तो ये आपके सजेशन, पहले आपने बता दिया क्या गड़बड़ हुई थी, रेलेवेंट डेट क्या है, और ये आपका लास्ट में आ गया सजेशन के प्राइसिंग नॉर्म के हिसाब से प्राइस क्या होनी चाहिए. ओके, तो एज आई से प्रेफरेंशियल याद रखने का था, काफी कुछ चीजें इसमें कवर हो गई थी. लास्टली, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रजिस्टर ऑफ लोन. आई बिलीव स्टूडेंट्स को आना चाहिए था, ये सिंपल था. इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट, एक दो नहीं, कई स्टूडेंट्स को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो गया, रजिस्टर ऑफ लोन कहाँ पे था, कई तो छोड़ के आ गए, कई कुछ भी लिख के आ गए. तो ये एक्चुअली इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड बोरिंग्स वाला चैप्टर, इफ यू रिमेंबर, शायद 11th या 10th चैप्टर में से एक था, CFL, अगर याद है तो. तो सेक्शन 186 सबसेक्शन 9 के हिसाब से एक्ट मैंडेट्स दैट एवरी कंपनी हैज टू मेंटेन अ रजिस्टर which shall contain the particulars of the loan. So guarantee given or security provided or even investment which is made. ठीक है, ये हो गया 186 subsection 9 का part. Now, every company which is giving loan or giving guarantee or providing security or making any kind of acquisition of the shares from the date of its incorporation has to maintain a register in form MBP2 and enter therein separately the particulars of the loans, the guarantee given, the security provided, acquisition, and aforesaid. This register shall be kept at the register office of the company, and the register shall be preserved permanently and shall be kept in the custody of the company, secretary of the company, or any person who is authorized by the board for this purpose. फिर उसके साथ साथ और क्या क्या चीजों का ध्यान रखना होगा. The entries in the register, either manual or electronic, shall be authenticated by the company secretary of the company or any other person authorized by the board for this purpose. Okay, and the extracts from the register may be open for the inspection, and the copies may be furnished to the members who demands for the same on the payment of the prescribed fee as mentioned in the articles, which shall not exceed 10 rupees for each page. So that's what you have to just explain. Register of loan, इसमें कौन सा बड़ी बात थी. Okay, and last wala, what do you understand by securitization? And people were like, क्या छप क्या है sir? So securitization is a transformation of the financial assets into securities. And securitization is used by the financial entities to raise fundings other than what is available via the traditional methods on balance sheet funding date के हिसाब से. Okay, so in other words, securitization is a process of pulling and repackaging of the homogeneous illiquid financial assets into the marketable security that can be sold to the investors. Now, the process that leads to creation of the financial instruments that represents ownership interest in or are secured by the segregated income producing the assets or pool of assets. So the pool of assets, that is collected collateral securities, are the pool of assets, and the assets are generally secured by the personal or real property. For example, you can say automobiles, real estate, equipments, but in some cases unsecured like credit cards, consumer loans also. There are 4 steps in securitization. What are those steps? Let's understand that. The 4 steps that you have to remember for securitization. Special purpose distinct entity is that is created to hold the title to the asset which is underlying the security. The originator or the holder of the asset, he has to sell the assets, existing or even a future, to the SPDE, that is a special purpose distinct entity vehicle, that is the SPV, which is created. And SPDE, with the help of the other investment banker, issues the security which are distributed to the investors, and the SPE pays the originator for the assets with the proceeds of the sale proceeds. So that's how we can write. तो ये हो गया पूरा securitization, समझा दिया और प्रोसेस क्या है बता दिया. लास्टली आता है ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट. होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही हो. पेपर टेलीग्राम पे है, डाउनलोड करना मत भूलना. और बहुत से जन जो ऑनलाइन देख रहे, प्लीज पेपर को सॉल्व करना, स्पेशली क्वेश्चन 1 ट्राई करना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. ओके, एंड फर्दर पेपर्स आर ऑन द वे, आ रहा है जैसे जैसे टेस्ट होते आएंगे. ऑल द बेस्ट.